देखते हैं द ग्रेट जेंडर पैराडॉक्स ऑफ इंडिया। The great and because of this great gender divergence, what is happening? It is completely impacting the overall development of it करेगा। मतलब women is passive recipient of empowerment। तो जो power का balance है ना, that has started shifting towards male। So first time you will see gender division started with Neolithic phase। Quotation कम, जो कोई एग्जाम में कोट कर रहा है, personal is political, is gender trap। Okay, one of the greatest feminists of 20th century, Simone de Beauvoir says, a woman is not born, she is made। So आज का टॉपिक है जेंडर। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक इन डिटेल, एक टर्म देखते हैं, द ग्रेट जेंडर पैराडॉक्स ऑफ इंडिया। द ग्रेट जेंडर पैराडॉक्स ऑफ इंडिया। इसमें वी एज ए कंट्री, अपने ऐसे में सब ये वाला जरूर डालना, द ग्रेट जेंडर पैराडॉक्स ऑफ इंडिया। वी एज ए कंट्री वर्शिप फीमेल गॉडेसेस। वी जस्ट अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया दुर्गा पूजा और काली पूजा भी लाने वाला है। एंड वी एज ए सोसाइटी हैव ग्रोइंग incidence of crime against women, whether it's in sexual crime, crime at a workplace, or any kind of crime. So this is one paradox. Same family which worship female goddesses, in the same family women are not given due attention। इंट्रा फैमिली रिसोर्स एलोकेशन बहुत ही बायस्ड है। इंट्रा फैमिली रिसोर्स एलोकेशन इज वेरी वेरी बायस्ड। फर्स्ट पैराडॉक्स। दूसरा पैराडॉक्स, we as a country are seeing the increasing level of literacy rate among women। literacy rate is increasing, true। gross enrollment rate is increasing, true। overall higher education में share of women increasing, second paradox। but labor force participation rate declining। how we are going to explain this phenomena? At the same time we have increasing literacy rate, gross enrollment ratio, higher education में participation, but लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमने देखा। इनफैक्ट हमने बिहार वाले केस में देखा था, याद है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जहां मेल वाले केस में 93% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो ऑनर है वो मेल है, लेकिन वहीं जब फीमेल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, मोर देन 50% आर ऑन हाउस होल्ड हेल्पर टाइप से, बट दे डोंट हैव ऑनरशिप। सो दिस इज सेकंड पैराडॉक्स। थर्ड पैराडॉक्स, in terms of electoral participation, you will see women has outnumbered men in overall जो percentage है women का, that is outnumbered the men, but in terms of their presentation they are still staggering 14% recent लोकसभा 2019 लोकसभा। और स्टेट असेंबली में बात करो तो मोर और लेस सिमिलर सिचुएशन जो मैंने पॉलिटी में पढ़ाया था, इंडिया फेसेस प्रॉब्लम ऑफ asymmetrical representation and underrepresentation। this phenomena explains how women are underrepresentation और यहाँ पे their participation is increasing। again this is another paradox। fourth paradox we are having, we are एक growing phenomena we have seen, एक नया culture we have seen
फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ट्रू, मतलब एग्रीकल्चर का जो बर्डन है दैट इज कमिंग ऑन फीमेल, एंड दैट फीमेल पार्टिसिपेशन, उस फीमेल का जो लैंड राइट है, प्रॉपर्टी राइट है, उसके नाम पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ऑनरशिप उसके नाम पे नहीं है। मतलब एग्रीकल्चर का बर्डन है उसके नाम पे, बट व्हेन इट्स कम टू प्रॉपर्टी राइट्स, इट्स नॉट, it's not there. In fact, one data says only 12% women in some form having property right. और एक बहुत बड़ा फेनोमेना है, एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एंड इट्स वेरी बिटर ट्रूथ, बहुत ही कड़वा सच है, वो ये, ए फादर अग्री टू पे डॉरी, बट he doesn't agree to give equal rights in property. This is what, so these are some of the great gender paradox of India, and this great gender paradox has led to what? The great gender divergence. You will see. And because of this great gender divergence, what is happening? It is completely impacting the overall development of India. ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को ये बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट कर रहा है। ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है, हमारे पॉलिसी मेकर्स इसको समझ नहीं पा रहे, बट दिस ग्रेट जेंडर पैराडॉक्स इज कंप्लीटली इंपैक्टिंग द ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ आवर इकोनॉमी, आवर ओवरऑल एज अ नेशन। यार एक टाइम पे हम ना विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी हम वर्ल्ड की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स हम विश्व में सबसे नीचे आते हैं। एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, वो लास्ट के बॉटम 1 2 3 में आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 कंपोनेंट होता है, और उस चारों कंपोनेंट में फीमेल का कंट्रीब्यूशन है। अगर फीमेल मां कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी तो चारों कंपोनेंट बच्चा दिखेगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखो, इंडिया का परफॉर्मेंस जेंडर गैप रिपोर्ट में 4 कंपोनेंट है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ऑल दिस। पॉलिटिकल पे इंडिया का थोड़ा बहुत ठीक ठाक है बिकॉज ऑफ आवर पीआरआईज, जो गवर्नमेंट ने पीआरआईज में रिजर्वेशन लेके आया। इनफैक्ट बिहार जैसे कुछ स्टेट ने 50% पहुंचा, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा पॉलिटिकल सुधरा भी है। बाकी जगह देखो इकोनॉमिक पे तो इंडिया अगेन बॉटम में। So this great gender paradox is converting into the great gender divergence. Because of this divergence, क्या हो रहा है कि एक चैरियट है, चैरियट के सब 2 व्हील है, दोनों व्हील में सर ग्रेट डाइवर्जेंस है, और ये चैरियट क्या है? डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट। ट्रू, ओवरऑल डेवलपमेंट। अरे डाइवर्जेंस ऐसा हो गया है कि लोपीसाइडेड हो गया है, एक तरफ से ये चक्का स्ट्रांग होते जा रहा है और ये वाला क्या कमजोर है, उसके साथ किससे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बार बार जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमेशा इसके कंपैरिजन देख रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी का टर्म भी अपने आप में समझो तो खराबी टर्म, क्यों? क्योंकि हम किसी के सापेक्षिक बात कर रहे हैं, हम हमेशा इससे कंपेयर कर रहे हैं कि हमको इसका बराबर हक चाहिए। हम क्यों नहीं सोच रहे कि नहीं यार इंडिपेंडेंटली वी हैव टू ग्रो। बट तो ठीक है, सबसे पहली चीज में क्या होनी चाहिए? पहले अपने इक्वालिटी चाहिए। और ये चीज हम समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज सिर्फ अकेला नहीं चल सकता। डेवलपमेंट कैन नॉट बी लॉपीसाइडेड डेवलपमेंट। ठीक है, दिस इज व्हाट द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने ऐसे के बारे में। एंड दीज आर द वर्ड्स, जेंडर पैराडॉक्स, ग्रेट जेंडर डाइवर्जेंस। ठीक है, ये सारा का सारा आपके ऐसे में दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे में टर्म्स नहीं दिखेंगे तो बाकी देखो फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पैसे लिखना सबको ही लिखेगा। ये टॉपिक एग्जाम में आता है ना, तो लगता है कि इस टॉपिक पे तो सबको आता है। ठीक है ना, एवरीवन विल राइट, ओनली ये जो की कॉन्सेप्ट है, की वर्ड्स हैं, यही आपके ऐसे को बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएगा। सो अब नाउ स्टार्ट आवर डिस्कशन। सर बस 1 मिनट, से ये डाइवर्जेंस ऑफ डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में बोले हैं क्या? नहीं, मैं बताऊंगा आगे जाके, बस मैं समझाने की देखो कोशिश कर रहा हूँ कि पहले क्या ग्रेट पैराडॉक्स है, तो तुम पैराडॉक्स समझ ही गई होगी कि अपन ना एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, ये डाइवर्जेंस लेके आ रहा है, ग्रेट जेंडर डाइवर्जेंस। अब ये डाइवर्जेंस कैसे लेके आ रहा है? सपोज कि तुम्हारे ये लेजिस्लेटिव बॉडी है,
ठीक है, इस लेजिस्लेटिव बॉडी में विमेन का शेयर सिर्फ इतना है। ठीक है, अब कोई बिल पास होगा, कोई एक्ट पास होगा, तो विल इट हैव ऑन एन एंगल जो विमेन के लिए भी काफी वो, सपोज मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कम्युनिटी जो अपने लिए कोई एक्ट लेके आएगा, ये इनके इम्पैथी, समझा इम्पैथी वर्ड यू नो ना, दे एग्जैक्टली नो कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग। सो दे जब ये कोई बिल लेके आएंगे तो वो बिल विल मोर एक्यूट इन लेटर एंड स्पिरिट देन समवन अदर इज ब्रिंगिंग। और मैंने एक वर्ड समझाया था बहुत पहले, इंपावरमेंट जो वर्ड है, इंपावरमेंट वर्ड क्या बोलता है, वुमेन को पैसिव बना देता है। इंपावरमेंट कोई करेगा आपको, वी नीड वीमेन एम्पावरमेंट, मतलब वीमेन को एम्पावर करने की जरूरत है। ट्रू। अब एम्पावरमेंट मतलब तो एम्पावरमेंट कोई करेगा ना, कोई यहाँ पे है जो एम्पावर करेगा, मतलब वीमेन इज पैसिव रिसिपिएंट ऑफ एम्पावरमेंट। तो वो चीज यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है कि ये जो सेक्शन है जिसका ओवर रिप्रेजेंटेशन, दैट विल मेक द बिल फॉर यू। व्हाई यू विल मेक दिस हाउस इज इक्वली आवर्स ना। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो कोई एक्ट बन रहा है, कुछ बन रहा है, देट आर नॉट वेरी मच जेंडर सेंसिटिव। तो इस कारण से क्या डाइवर्जेंस है ना क्रिएट। अब ये डाइवर्जेंस क्रिएट होगा, ये ओवरऑल हर जगह क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे कारण से इसका सबसे बहुत जगह इंपैक्ट आएगा, बट सबसे बड़ा इंपैक्ट मैं कहता हूँ डेवलपमेंट पे आएगा। डेवलपमेंट ये वाला नहीं, डेवलपमेंट अमर सेन वाला, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। अब एक फैमिली में इंटर हाउस होल्ड रिसोर्स का लोकेशन सही से हो रहा है, सो वुमेन आल्सो फील एम्पावर्ड, मतलब उसके पास भी वो एजेंसी है। सी नाउ कैन हैव टेक डिसीजन, वह फैमिली प्लानिंग में मेरा से है। आई कैन से कि नहीं नहीं, आई डोंट नीड मोर चाइल्ड। ठीक है, देख सी कैन से कि नो, आई कैन पोस्टपोन फॉर 2-3 years, अभी थोड़ा वो करते हैं, गैप रखते हैं। सो एक तो अर्ली चाइल्ड मैरिज करवा दिया, बिकॉज वुमेन आर सीइंग बर्डन ना। मैंने भी दिखाया तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन, जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन कर रहा है तो वुमेन को तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, उनके लिए तो कुछ तो पर्पस होगा। बेसिकली ये जो मैं पैराडॉक्स एक्सप्लेन करूंगा तो पता चलेगा कि ये जो लेबर फोर्स लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट और ये सब इंक्रीज इसलिए हो रहा है ताकि विमेन को ये जो लड़का खोजने में आसानी हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक आईसीआर एक रिपोर्ट कह रही है, जिस रिपोर्ट में पाया गया कि एक तरफ एजुकेशन लेवल इसलिए बढ़ाया जा रहा है बच्चों लड़कियों का, ताकि जो ग्रूम का प्रोस्पेक्ट है वो ब्राइटर हो जाए। सो ये सही इंपैक्ट कहाँ रहा, लड़के की कम एज में शादी हो गई, कम एज में शादी हो गई तो जो बच्चा बॉर्न दोनों पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, पीएफआर विल बी हाई। तो मेनी थिंग्स, जो मेनी डेवलपमेंट थिंग्स हैं उसका सब पे इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे जो बड़ा इसका इम्पैक्ट आता है वो डेवलपमेंट पे। इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करूँ, आईएमएफ का डेटा वेटा सब जो अभी वो उस पे नहीं है, अगर 27% जीडीपी विल इंक्रीज ऑल दिस थिंग्स, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा इस पे आएगा। आपकी इकोनॉमी एक वेल बीइंग इकोनॉमी नहीं बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। एनी डाउट? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। जस्ट इमेजिन अ टाइम बिफोर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, सोसाइटी कैसी होगी? नोमैडिक, ठीक है, पास्चुरलिस्ट, मस्त जंगल में घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं और फॉरेस्ट बेस्ड प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहे हैं। सो मोर और लेस दैट सोसाइटी वाज egalitarian. That society was egalitarian. That society was a kind of primitive communist society. कम्युनिस्ट समझते हो ना हम लोग, बेसिक वो सब जगह मार्क्स वाला कम्युनिस्ट नहीं समझ रहे। कम्युनिस्ट मतलब कि सबको इक्वली रिसोर्स में एक्सेस है। ये छोटी सी कम्युनिटी है यार, वहाँ पे फॉरेस्ट में इतने रिसोर्सेस है, सो देयर इज मच बर्डन ऑन रिसोर्सेस। एंड इस सोसाइटी में आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, प्री एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एज। एंड इस सोसाइटी में देयर इज नो जेंडर डिवीजन। अब बोलोगे सर जेंडर डिवीजन तो पहले भी होगा ना, तो थोड़े ना जेंडर डिवीजन आ जाया है। नो सर, दैट इज बायोलॉजिकल डिवीजन। दैट इज बायोलॉजिकल डिवीजन बिकॉज ऑफ बायोलॉजी। जो मेल फीमेल में डिफरेंसेस हैं दैट इज देयर, बट देयर इज नो एज सच सोशल डिवीजन कि यार मेल यही काम करेंगे, फीमेल यही काम करेंगे। दैट इज जेंडर डिवीजन। मस्त सोसाइटी चल रहा है, अचानक से वी सॉ अराउंड 7000 BC न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, दैट इज एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। So first time in agricultural revolution, what happened? First time we had a kind of settlement. We had a kind of settlement जहां पे हमने फर्स्ट टाइम टिक के रहना शुरू किया। छोटा सा
हैमलेट कह लो या फिर विलेज कम्युनिटी कह लो, विलेज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट गॉट इमर्जिंग, और अपने यहाँ एग्रीकल्चर बिकम द मेन एग्रीकल्चरल कम्युनिटी हो गई। एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटी नीडेड व्हाट? लेबर फोर्स। ट्रू। अब लेबर फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आ गया तो इट नीडेड, तो लेबर फोर्स में कैसा? फिजिकल। सो विमेन विमेन लैग्ड बिहाइंड लेबर फोर्स में। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक मॉडल चेंज हुआ, इट गिव बिट एडवांटेज टू मेल। चलो ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज शुरू हुआ कि मेल आर मोर प्रोडक्टिव देन विमेन, फीमेल। तो जो पावर का बैलेंस है ना, दैट स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स मेल। सो फर्स्ट टाइम यू विल सी जेंडर डिवीजन स्टार्टेड विद नियोलिथिक फेज, विद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा लोग बोलते हैं, इनफैक्ट सेपियंस में युval नोआ हरारी सेज कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने जेंडर के सेंस में भी इट हैज पुट बैक, ये रिग्रेसिव स्टेप था। इसके बाद अभी तक क्या है कि वी आर डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट, वी आर डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल एंड वी आर मूविंग। एक जगह रिसोर्स खत्म होता है, वी आर मूविंग अनदर प्लेस, सो वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। बट यहाँ पे क्या है, वंस वी हैव सेटल्ड कम्युनिटी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम यहाँ वाला जो लैंड वहां पे जाएं खेती करने के लिए। सो दे ऑलवेज वांटेड टू हैव लैंड नियर बाय देम। सो अगेन इस लैंड को कॉन्क्वेयर करने के लिए यू नीड पावर। सो दिस स्ट्रगल based on physical power again gave due advantage to male. And with rise, we also saw the institution of marriage, which is getting established, well established at this time. So again, it was decided कि मैरिज करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी एक को तो शिफ्ट होना पड़ेगा, इधर डाउटर और इधर सन। अब एक बाप सोचता है कि नहीं 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 यार, बेटा चला जाएगा तो खेती कौन संभालेगा, लड़ेगा कौन? सो डाउटर वाज शिफ्टेड। सो ये अगेन सी इज गोइंग टू सम अनदर होम। एक इस वाले घर में जो उसका खुद की पेरेंट की फैमिली है, सी इज फीलिंग एक दिन तो जाना ही है। यहाँ पे दूसरे घर से आई है, तो ये कहीं की नहीं। दिस जो पावर इनबैलेंस क्रिएट किया, तो यहां से यू सी कि सीड ऑफ पैट्रियार्की हैज बीन सोन। दिस सीड ऑफ पैट्रियार्की बिकम prevalent in later after agricultural revolution. Gender division started. Now we saw a period of great civilization, Harappan civilization. Actually, we don't have any concrete evidence because its script is not yet deciphered. But given the nature of urbanized economy and given that it's very much based on agricultural surplus food, this gender division definitely would have prevailed here. Again, we saw a break. हमारी civilization में break आता है. We don't know exactly, we don't have much evidence. Then we saw again era of Rigvedic period, a early Rigvedic period. An early Rigvedic period is somewhat pastoralist, nomadic. So again, you will see this economy doesn't give much importance to agriculture, doesn't give much importance to land economy. So at this time, again, you will see कि women को अभी भी marginalize नहीं किया गया है. So इस time पे you will see कि women is participating in sabha samiti. Women का भी political say है, but with the later Vedic period, we saw this economy becoming agricultural based plus surplus food giving rise to urbanized economy. So we saw rise of Mahajanpadas. So again, Mahajanpadas, it needed army. So again, physical force, it needed very big economic structure to support such a huge army, such a big urbanized economy. We saw again rise of agriculture. So definitely the same phenomena, history is repeating itself यहाँ पे.
We saw again the same phenomena, और यहां से जब phenomena continued, so it become well established fact, this gender division got so deeply rooted in our custom, tradition, convention, collective wisdom, collective conscience. We never start question this. We saw this is acceptable. We saw this is something that is divine. We saw something this is coming out of the nature of women. We forgot that gender division is different from the biological division, and we confuse with this too. और इतना ज्यादा डीपली इंट्रेंस्ड हो गया हमारे साइकी में कि वी नेवर क्वेश्चनड इट, एंड विद टाइम women started regressing. विद टाइम ये रिजिडिटी बढ़ती चली गई और सोसाइटी अपनी बनती चली गई पैट्रियार्कल सोसाइटी. पैट्रियार्कल वर्ड लिटरली मीन्स रूल ऑफ एल्डर और रूल ऑफ मेल. और फेमिनिस्ट थिंकर से ये दोनों है, रूल ऑफ एल्डर मेल. So society, family, everything become patriarchal. This is not a phenomena only present in India. This has become a global phenomena. Nowhere women were given equal treatment. The first country which used to give universal adult franchisee to women. Can anyone say? पहला कंट्री जिसने औरत को वोट देने का अधिकार दिया. So it came very late, either in developed economies also. So with time, we saw कि women, this gender division becomes so rigid, so influencing. We accepted is something कि जो कि हमारे सोसाइटी में, हमारे साइकी में डीपली इनग्रेन्ड हो गया. एक टॉपिक देखो, ये 2020 का ऐसे है, पैट्रियार्की इज लिस्ट नोटिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. पैट्रियार्की लिस्ट नोटिस क्यों? बिकॉज ये इतना प्रिवेलेंट है ना, इतना ये वाइड स्प्रेड, इतना बचपन से हम देखते आ रहे हैं ना, कि इट हैज बिकम कंप्लीटली एक्सेप्टेड इन आवर साइकोलॉजी. इसको मैं आगे समझाऊंगा. एक टर्म है जेंडर ट्रैप. There is a term called gender trap. Because of this gender trap, patriarchy has become least noticeable. ठीक है. So this is the जब भी आप women पे ऐसा लिखने के लिए, this is how you will set up your context. कोई सा भी women पे से कुछ भी है, women आ गया, gender आ गया, ये आपको context establishment में काम देगा. और ऐसा नहीं किसी को आप 2-3 पेज में लिखेंगे, आप इसको समराइज करके डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द सेट, आप इसको 1 से 1.5 पेज तक, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है. ये सिर्फ जब मैं ऐसे बताता हूँ ना कि इंट्रोडक्शन को जो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग वाला पेज होता है, वहां पे आपको ये काम आएगा. सो नेक्स्ट वी सॉ द थ्रू आउट द पीरियड. ये तो उस टाइम की बात है जब आपकी इकोनॉमी ओवरऑल ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी. ये उस टाइम की बात है जब आपकी इकोनॉमी कनेक्टिव इकोनॉमी थी. मौर्यन टाइम पे बिग एम्पायर, कुशाना, कनिष्क, दीज आर ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी. तो उस टाइम पे वुमेन की हालत खराब होने लगी थी. जस्ट इमेजिन व्हाट अबाउट मेडाइवल पीरियड, जब फ्यूडलिज्म आ चुका है, कंप्लीटली इकोनॉमी लैंड बेस्ड हो चुकी है, किंग की जो अथॉरिटी वो डिक्रीज होने लगी, फ्यूडल लॉर्ड्स इंपॉर्टेंट होने लगे. तो जब भी फ्यूडलिज्म आएगा तो वुमेन का क्या होगा? फर्दर डिक्लाइन. तो वी सॉ जब मेडाइवल पीरियड में रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, दिस वाज द पीरियड आल्सो वेयर वुमेन के बारे में बात होनी शुरू हुई इन यूरोप एंड इन इंडिया. जैसे का पूरा जागरण स्टार्ट होता है, सोशल रियलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट होता है 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में, द फर्स्ट थिंग दे टुक वाज द वुमेन एम्पावरमेंट. एंड देखो एक और चीज समझो कि ये जो चीज है ना, दैट क्योंकि जो डोमिनेंस है मेल ओवर फीमेल, दैट कैन नॉट बी सस्टेन्ड सिर्फ ओनली फिजिकल फोर्स. वी नीड सम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर. मतलब साइकोलॉजिकली तुम्हें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा. सो वी नीड सम प्रोपेगेंडा. वी नीड सम प्रोपेगेंडा टू एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी ओवर फीमेल. जब अपना कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स वे सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ देयर मिलिट्री फोर्स, इन टर्म्स ऑफ अम्यूनिशन एंड टेक्नोलॉजी, येट वो भी साइकोलॉजिकली अपने को ट्रिक कर रहे, तो प्रोपेगेंडा फैलाएगा, व्हाइट्स मैन बर्डन, हम जो तुमको रूल कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, बिकॉज यू गाइस आर नॉट कैपेबल ऑफ रूलिंग योरसेल्फ. समझो बात को बाबू, ऐसे करके. सिमिलरली इफ यू कंट्रोल, if you want to propagate such patriarchal notion that cannot be only propagated through, इतना लंबा टाइम के लिए कैसे इसको तुम लेके चल सकते हो विदाउट हैविंग सम साइकोलॉजिकली बॉन्डिंग
साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल कंट्रोल, साइकोलॉजिकल वारफेयर। सो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। क्या सर? रिलीजन, इस पे तो सब बिलीव करता है, तो रिलीजन के नाम पे बहुत सारे ऐसे ऐसे रूल्स बना दिए गए जो हमेशा वुमेन को इन्फीरियर दिखाते रहते थे। कभी बायोलॉजिकल कंडीशन को लेके, कभी साइकोलॉजिकल कंडीशन को लेके, कभी कुछ कभी कुछ। बिकॉज रिलीजन इन ओल्डर टाइम, रिलीजन और मोरालिटी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड था। इंटरलिंक क्या था? दोनों आपस में क्या बोले, सत्तू और नमक की तरह मिला हुआ था, चीनी और पानी की तरह घुला हुआ था। मतलब मोरालिटी मतलब रिलीजन, रिलीजन जो कह रहा है वही मोरल है। ठीक है। सो रिलीजन जो कह रहा है, रिलीजन ने बोला नहीं यार, दिस वुमेन कैन नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू टेंपल, तो कैन नॉट इंटर। तो ये दिस इज द टूल ऑफ रिलीजन दैट हेल्प टू प्रोपेगेट द प्रोपेगेंडा। तो जब भी अपन बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी में जब स्टार्ट हुआ रिफॉर्मेशन, तो इट फर्स्ट स्टार्टेड विद टू थिंग्स, विमेन। और वो समझते विमेन प्रोटेक्ट, विमेन को करना है वो सही, तो फर्स्ट रिलीजन को सही करो। सो राजा राम मोहन राय दोनों चीज पे एक साथ काम करना शुरू किया। इनफैक्ट इसका फर्दर अब देखोगे जहां कहीं भी ये दोनों चीज पैरेलल चली, इसका इम्पैक्ट फिर आया। एंड विद टाइम यू सॉ women का पार्टिसिपेशन विल आल्सो इंक्रीज्ड इन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। दिस इज हाउ यू विल एस्टैब्लिश योर कॉन्टेक्चुअल सेटिंग। नाउ कमिंग टू बॉडी वाला पार्ट में कोई सा भी ऐसे होगा, आपको इसी सारे डायमेंशंस को घुमा फिरा कर लिखना है। जो फर्स्ट चैलेंज वी सॉ इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इन पॉलिटिकल फील्ड, since ancient time we have seen politics is all about what? Power structure. Politics is about what? Control of power. सो पॉलिटिकल फील्ड में आप देखोगे वुमेन को जानबूझ के साइडलाइन किया गया। क्यों? बिकॉज दिस इज सेंटर ऑफ पावर। थ्रू पॉलिटिक्स वी रीच टू द पावर सेंटर। पावर आपके हैंड पे आती है, और उस पावर को जो आपके हैंड में आती है, उस पावर को अगर आप यहाँ पे वुमेन को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, उसको इनकरेज करेंगे, डेफिनेटली सी विल आल्सो रीच हियर। एंड हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं, रजिया सुल्तान, हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं इंदिरा गांधी एंड मेनी अदर वुमेन इन डेवलप्ड कंट्रीज। सो दिस इज व्हाट। एंड एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जिस इंडिविजुअल लिबर्टी को लेके लिबरल थिंकर्स ने पूरी पूरी फिलॉसफी दे दी, स्टेट का, राइट का, सब कुछ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ गई, फिर अगेन वी सॉ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत कुछ आया। बट ये कभी भी जो वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन का इशू था, खास करके विद इन फैमिली, विद इन द फोर वॉल्स ऑफ विद इन फैमिली, ये कभी भी पॉलिटिक्स का डिबेट नहीं बना, ये कभी भी पॉलिटिक्स का मुद्दा ही नहीं बनेगा। वी ऑलवेज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेस, लेबर, कैपिटलिस्ट क्लास, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड ऑल दिस थिंग्स, बट वी नेवर फोकस्ड एक वुमेन विद इन फैमिली कितने सारे इसको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। इट नेवर बिकम पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, जिसको अपन बात करते हैं ना, पब्लिक रीजनिंग, पब्लिक डिस्कोर्स, नेवर बिकम पार्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जब जब जो चीज पॉलिटिकल डिबेट का पार्ट बनता है, पब्लिक रीजनिंग का पार्ट बनेगा, दैट विल डेफिनेटली सी इंप्रूवमेंट। बट ये जो पॉलिटिकल वाला पार्ट है, इट नेवर बिकम, जो वुमेन के इश्यूज हैं विद इन फैमिली, विद इन सोसाइटी, इट नेवर बिकम पार्ट। इसका एक रीजन ये है कि वुमेन इज नॉट अ मोनोलिथिक ग्रुप, इट इज नॉट ए होमोजेनस ग्रुप। सो ये जो वुमेन एज ए ग्रुप, इसकी जो आइडेंटिटी है, इट डिवाइडेड अक्रॉस वेरियस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। This is one reason, but main reason is that the politics which is dominated by male never entertained the issues of women. So in 1970s में आप देखोगे जब feminist thinking started rising, so very famous quotation come, जो कोई एग्जाम में कोट कर रहा है, personal is political, personal is political। ये जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, दे आर सेइंग कि ये जो वुमेन का पर्सनल स्पेस में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दैट शुड आल्सो बी पॉलिटिसाइज्ड।
इससे बात होनी चाहिए समाज में. वी शुड नो, वी शुड टॉक अबाउट दिस. एंड धीरे धीरे वी सॉ इस फेज में ये जो पर्सनल स्फेयर है, यू सी इन द स्टार्ट ऑफ दिस मिलेनियम, many personal issues come to the fore. And women की प्रेजेंटेशन की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होने लगी. वी सॉ इंडिया में टुक लॉन्ग टाइम एंड वी गेव PRIs में फर्स्ट टाइम 33% मैंडेटरी आरक्षण टू वुमेन. एंड स्टिल ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अपन बात करें, दिस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज नॉट समथिंग दैट इज कंप्लीटली कमिंग आउट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. इट इज समथिंग, अगेन एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है सर. इसने बोला चलो एक लॉ बना देते हैं. जो मैंने बात की थी वो वाली ना, अंडर रिप्रेजेंटेशन, असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ये यार, ये मेल डोमिनेटेड तुम्हारा हाउस है. क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तुम्हारा फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया, वुमेन वाली बात आ गई. तुम यू नो यू आर पार्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सेज. तो जब तुम्हारे पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, यू ब्रॉट 33% रिजर्वेशन. ये क्या हुआ कि एक मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन इज ट्राइंग टू एम्पावर फीमेल सेक्शन. एंड व्हाट इज हैपनिंग, बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, वो तो वैसा ही है. तो ये इसका तो इंप्लीकेशन आएगा ना. आपने पॉलिटिकली एम्पावर किया वुमेन को, 43% सीट्स होंगी, वो आरक्षित होंगी उनके लिए. एंड दिस ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, ये वर्ड यूज करना, दिस ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ सच अ बिग मूव कैन नॉट बी रियलाइज्ड, बिकॉज जो जबकि आधारभूत, जबकि फंडामेंटल स्ट्रक्चर सोसाइटी की है, वो तो सर एज इट इज है ना. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर सीइंग सरपंचपति फेनोमेना. किसने पंचायत देखी, पंचायत वेब सीरीज अमेजन पे, अमेजन प्राइम पे. बस चूंकि सीट आरक्षित है तो वुमेन को बना दिया गया. इन सम सेंस ठीक है, वुमेन में वो एबिलिटी है, असर्टिवनेस है, लॉन्ग टर्म, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म कैन इम्पैक्ट. बट वो जो सर आपके पास डिपेंडेंसी है ना, वो तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा ही होगा यहाँ पे. ट्रू. एंड दिस सरपंचपति फेनोमेना जो आप यहाँ देख रहे हो, हाँ, नारी वंदन अधिनियम, same phenomena will also be here. Although it's a progressive step, yet this political empowerment is again going to be, this transformative potential cannot be realized unless ये fundamental structure को change करो. So this is what we will talk about in political dimension. Political, which we know it's very very unequal representation in terms of Bangladesh, in terms of many other orthodoxical society, भूटान वगैरह, ऑल दिस ऑल्सो. भूटान तो फिर भी ठीक है, और नेपाल ले लो जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज बेटर देन इंडिया. सो पॉलिटिकली अपनी सोसाइटी हैज बिकम इज मोर रिग्रेसिव देन अदर सोसाइटी. सो पॉलिटिकल वाले में दिस 2-3 पॉइंट्स दैट इज हैव टू ऑलवेज मेंशन. द बिगेस्ट चैलेंज फॉर वुमेन इकोनॉमिक स्फीयर. एंड बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर है ना, इन दोनों में जो डिप्राइवेशन है, deprivation in economic and social sphere is the main reason for other kind of deprivation. So जो पॉलिटिकली आप इनइक्वालिटी देख रहे हो ना, ये सारी चीजें, पावर स्ट्रक्चर जो हमने उनको एम्पावर करने की कोशिश की, वी आर ब्रिंगिंग आउट मेनी बिल्स, बट स्टिल दैट स्ट्रक्चर इज नॉट गेटिंग चेंज्ड. इकोनॉमिक स्फीयर, सोशल स्फीयर में जो होना चाहिए था, दैट इज नॉट देयर. सो तो मेन जो इशू है, दैट इज women का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, दैट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दे डोंट हैव इक्वल प्रेजेंटेशन, इक्वल शेयर. और जो सबसे बड़ी बात है, अगर इक्वल शेयर नहीं तो क्या नहीं होगा सर, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा. हमने पढ़ा इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, और इंक्लूसिव ग्रोथ का सबसे बड़ा कंपोनेंट है इंटरजेनरेशनल इक्विटी ना, इंटरजेनरेशनल इक्विटी. इंटरजेनरेशनल इक्विटी में जो सबसे बड़ा सेक्शन है, दैट इज डिप्राइव्ड. ट्रू. एंड female labor force participation rate we'll talk about, that is declining. अपना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्ल्ड के
बॉटम 5 में होगा। इनफैक्ट हमारे फीमेल ये है, दैट इज येमेन, ये सऊदी अरेबिया, ईरान, जो फीमेल कंजर्वेटिव सोसाइटी हम उसके बराबर पहुंच चुके हैं। सो व्हाई दिस फेनोमेना हैज अल्टीमेटली रीच्ड Bangladesh is having more than 60 to 70-80%, 60-70% female labor force participation rate. और बांग्लादेश में ये देखो, बांग्लादेश से प्रूव्ड, बांग्लादेश का इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम इज फार अहेड ऑफ पाकिस्तान, एंड आई थिंक इट्स ओवरऑल its economy has surpassed Pakistan's economy in terms of GDP. Amandeep? Yes sir, human development में भी आ गया। So what I'm saying, look, बांग्लादेश कहां पहुंच चुका है, we are still regressing, and this is a force propelled by this women. There's a story behind the Bangladesh success. There's a story behind success of Vietnam, success of Philippines. मैंने एक बात कहा था ना, ग्लोबल वैल्यू चेन इज डिसरप्टिंग, और उस वैल्यू चेन का जो इंटीग्रेशन है, दिस इज रिलोकेशन they are shifting to Bangladesh, they are shifting to Vietnam, they are Philippines, rather than shifting to India. So you can interconnect now. अब ये प्रॉब्लम पास हुई कैसे? वी एज ए इकोनॉमी, हमारे पास वी आर लिबरल डेमोक्रेसी, हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, बट ये तो दिख नहीं रहा है ना सर। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ प्रियम्बल में दिख रहा और आर्टिकल 15-16 में दिख रहा, एक्चुअल में ग्राउंड पे तो नहीं दिख रहा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो क्या ये सब मेयर यूटोपियन आइडियल्स हैं? और आप बात करते हो, क्या बोलते हो आप कि आर्टिकल 39D में सिक्योरिंग लाइवलीहुड फॉर एवरीवन, नो मींस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स? ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को लिखना नहीं, बताना है आप लोग को वहां पे भी कि हम इन सारे आइडियल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, डेरे डाइवर्जेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल एंड सोशल रियलिटी। ठीक है, नाउ लेट्स गोइंग बैक टू दिस, इन दिस इकोनॉमिक स्फीयर, व्हाई दे आर गेटिंग रिलेगेटेड, व्हाई इट हैज बिकम रिग्रेसिव? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट feudal, patriarchal and parochial society. ये वर्ड ऐसे में दिखने चाहिए, feudal, patriarchal and parochial society. अब जब सोसाइटी आपकी फ्यूडल होगी, वी नो फ्यूडल सोसाइटी की मेंटालिटी क्या होती है। कहीं ना कहीं सोसाइटी अगर प्रोग्रेस कर भी गई तो माइंडसेट तो वही फ्यूडल वाला ही है ना सर। इसका बेस्ट एग्जांपल खाप है। जब मैंने पढ़ाया था लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, तो मैंने खाप के बारे में बताया था, उसमें एक वर्ड, दिस इल पोस्ट ऑफ फ्यूडल इज दिस इल इन्फॉर्म्ड फ्यूडल आउटपोस्ट, बोला था कि ये वाला वर्ड नोट कर लो, जब भी खाप आप लिखना हो ना, दिस इल इन्फॉर्म्ड फ्यूडल आउटपोस्ट स्कैटर्ड ओवर द इंडिया। ठीक है, तो ये फ्यूडल लॉर्ड है, ये बताएंगे समाज में क्या करना है नहीं करना है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। इन्होंने ठेका उठा रखा है मोरल पॉलिसिंग का, इन्होंने ठेका उठा रखा है मोरल विजिलेंटिज्म का। और यहां तक तो सर सही था, दे ऑल्सो डिसाइड on crime and punishment, especially in the matter of women, they decide on crime and punishment. और ये कई बार तो ऐसा पाया गया कि they have given very, in the form of punishment, they asked to sexually abuse a woman from any community in the form of punishment. This feudal outpost is the biggest threat to liberty. Social ostracism से लेके हर चीज पे, वुमेन काम करने बाहर जा रही है तो उसको स्टिग्मा बना देना, घर में खाए पिए कमी पड़ गई का तो हजारों जाके काम करे। दिस इज व्हाट मेंटालिटी वी आर हैविंग, वी हैव ऑलवेज सीन, वी हैव एसोसिएटेड, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस, दिस इज क्राइम एंड पनिशमेंट। दे आर डिसाइडिंग women cannot wear jeans, क्यों? बस क्यों का जवाब नहीं है, दे कांट वियर, ये हमने पास कर दिया ऑर्डर। सेम गोत्र मैरिज कर दो, जब कुछ अगर ऐसे इश्यूज हो जाते, दैट इज गोइंग अगेंस्ट सोशल नॉर्म, दे विल से इसको ये पनिश कर दो। ऑनर किलिंग, बट दे फॉरगेट द क्राइम एंड पनिशमेंट इन मॉडर्न नेशन स्टेट इज नॉट बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, बट इट इज बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट।
The very notion of crime is not between society and individual. That is between individual and a state. And society has nothing to do with that. But still, they wield authority. अब authority कहाँ से? That authority is willed by psychological. This is what खाप and feudal plus patriarchal दोनों का mix up is खाप. Patriarchal I explained as earlier. Patriarchal is means what? Rule of elder male. And that is being seen everywhere. So, first thing, we'll कि जब फीमेल्स लेबर फोर्स के पार्टिसिपेशन रेट में जो डिक्लाइन आना शुरू हुआ है, दैट इज फ्यूडल पैट्रियार्कल पैरोकियल सोसाइटी. इसमें आपने देखा खाप का एग्जांपल. खाप इज मोर अबाउट मोरल पॉलिसी, मोरल विजिलेंटिज्म, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म. और ये जब वुमेन की लिबर्टी को करेगा हनन, तो क्या होगा? दे अटैच स्टिग्मा, स्टिग्मा टू वर्किंग वुमेन. वुमेन रात को 10 बजे आ रही है काम करके, नाइट लेट टू नाइट, वो 4 बूढ़े बैठे हुए हैं, दे विल हैव ऐसी निगाहों से देखेंगे कि जैसे कोई क्राइम करके आ रही है. घर वाले भी 4 क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं काम जॉब छोड़ दो, लेकिन ये रात को 10 बजे नहीं आना है. दे डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कुछ हो सकता है. दे आर प्रोवाइडिंग कैब, सेफ्टी इज देयर. कहीं ना कहीं सोसाइटी भी जिम्मेदार है. दैट मेक्स वुमेन फील अनसेफ एंड एज वेल एज फैमिली. एंड उसके बाद मतलब विद इन दिस पॉइंट में एक्सप्लेनेशन चल रहा है, स्टिग्मा वाला पॉइंट अपन देखा. देन स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, वो इज्जत वाली बात. वुमेन काम नहीं करेंगे, खास करके जो बड़े राजा महाराजा वाली फीलिंग जाती है, घर में हम लोग भूखे रह जाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू वर्क बट वुमेन विल नॉट वर्क. बाबू साहब है हम. जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बिकॉज वर्किंग वुमेन विल ब्रिंग शेम टू द फैमिली. और तो और वो जो मेल डोमिनेंस है, वो मेल डोमिनेंस इज फीलिंग इनसिक्योर. वो मेल डोमिनेंस को फियर है कि यार हमने सेंचुरीज से वी हैव एक्सप्लॉइटेड वुमेन, वी हैव रूल्ड देम. हाउ? बिकॉज ये जो वुमेन थी दैट वाज नेवर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. तो लात गाली बात सुन के भी यार बोलती चलो कुछ नहीं, यही रहते हैं, इज्जत बचाते हैं, किसी तरह जीवन काट लेते हैं. बट वंस शी विल बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, सो शी विल रेज वॉइसेस, शी विल आस्क क्वेश्चंस. वो अपनी बात पलट कर जवाब देगी. और ये फियर है कि वर्किंग वुमेन विल नॉट एक्सेप्ट मेल डोमिनेंस. वो जो हर काम आपसे पूछ के किया जाता है, दुनिया में सबसे प्यारी चीज पता क्या होता है? पावर. और हर इंसान लाइफ में पावर कभी ना कभी एंजॉय करना ही चाहता है. जब इस गिवन मौका यू विल एंजॉय. एक जब बच्चा बचपन से जब बड़ा हो रहा होता है, द मोमेंट ही रीचेज 14-15 साल का होता है, छोटा भाई बहन होता है, देखो स्टार्ट एंजॉयिंग पावर. चलो घर चलो, पढ़ना बोल देंगे. द मोमेंट यू बिकम यंगर, और बड़ा हो गया, आपने पढ़ाई करने पहुंचे, बीटेक क्या जो भी कर रहे हो, मेडिकल सीनियर, वो रैगिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज पावर. वो पावर का फील ले रहे हो, मजा आ रहा है. तो और बड़ा हो गया, जैसे भी तैयारी करने के लिए आ गए हो, और जस्ट इमेजिन किसी ने 2-3 अटेम्प्ट दे दिया, 2-3 बार इंटरव्यू दे दिया, कोई आपसे पूछने के लिए आ गया कैसे तैयारी करनी चाहिए, जो कि चहक चहक के मुंह से निकलता है. अकेले फीलिंग दैट पावर, हमसे कोई पूछने के लिए आया, सबमिसिवनेस. सो दैट फीलिंग ये ह्यूमन नेचर में है. हम ह्यूमन नेचर जो लिबरल थिंकर्स ने बताया था ना कि ह्यूमन नेचर इज वेरी वेरी करप्ट, सेल्फ सेंटर्ड, ग्रीडी, वो है. और जैसे ही मौका मिलता है ये दुनिया भर जगह से लात खा लिया, लेकिन जहां इसको मौका मिलेगा पावर दिखाएगा. यू विल सी मेनी एग्जांपल्स कि दुनिया में सब जगह से लात गुस्सा खा के आ गया, लेकिन घर पे आके बीवी पे लात गुस्सा करके अपना गुस्सा उतार दिया. बिकॉज हियर ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज पावर. सो ये जो फियर है, ये डोमिनेंस है मेल का, एटलीस्ट लात गुस्सा नहीं उतारा, कम से कम उसकी वाइफ के साथ आज जी खाना कोची बनता है, सब्जी बना दिया है, आज खाना में ये बना दिया है, आज जाए वहां घूमने के लिए. फील आता है, सीडो फीलिंग है वो. और ये डोमिनेंस दे डोंट वांट टू लूज. दिस इज वेयर दे डोंट लाइक अ वर्किंग वुमन. फर्दर इसी में सोशल नॉर्म जिनके घर की औरतें एकदम बिल्कुल घर में बैठ के एकदम घर चला रही हो, घर संभाल रही हो. एक वो फिल्मों में देखा, साउथ इंडियन मूवी में, वो एकदम मुच्छड़ वाला बैठा होता है एंड वो भाभी आंटी आती हैं बढ़िया से खाना वाना लेके, पूरा एकदम ज्वेलरी वोलरी डाल के. इट्स सोज
हमारे यहाँ औरत काम कैसे करेंगे, मोर और लेस सेम ही पॉइंट है बट इन डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद ये 3 पॉइंट इसको लिखना जब कभी भी ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे होगे, सोशल फ्यूडल पैट्रियार्कल एंड पैरोकियल सोसाइटी में, तो ये वाला पॉइंट मेंशन करना, 3 पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट मेंशन करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने सेकंड पैराडॉक्स बताया था, एज पर ICRI ईयर रिपोर्ट, literacy rate is increasing, literacy rate is increasing, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट इज इंक्रीजिंग, एंड योर ओवरऑल हायर एजुकेशन का जो इन्वेस्टमेंट वो भी इंक्रीजिंग, बट दैट इज नॉट गेटिंग ट्रांसलेटेड इन योर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ISCR की रिपोर्ट में लिखा हुआ था ये बात, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इट्स सीन, investment in education is seen or done with the purpose of marriage than to find a suitable job, than to give an opportunity to do job. You need to mention, sir, psychology अभी वहीं पे है टिकी हुई। Third, World Economic Forum says India में gender pay gap is one of the highest in the world. It is somewhere around 60% gap, and this gap is not only in informal sector or casual labor sector, but you see such kind of gap in highly formalized economy, highly formalized sector, big MNCs. It shows that there is prevalence of glass ceiling among these big corporations. Fourth point, growth of formal sector job did not absorb the increasing female labor force. It again, वो जो ग्लास सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हुआ, फॉर्मल सेक्टर जॉब का तो ग्रोथ हो रहा है, बट दैट सेक्टर जॉब इज नॉट able to absorb the increasing female labor force because of that patriarchal glass ceiling, and this is leading to crowding out of women out of labor force. You all know what is labor force. This is not someone who is employed in economy, rather these are the people who are looking for job. तो एक टाइम ऐसा आ गया, वुमेन ने बोला ठीक है यार, हमें करना ही नहीं, ये कुछ होना तो है नहीं, तो क्यों इतना मगजमारी करें, चलो चिल आउट करो, जो है जैसा चलो रहने दो, होई है वही जो राम रचि राखा. So crowding out of women out of labor force, that's why we saw a declining phase of labor force participation rate, because the two phenomena, that is jobless growth plus growthless job, is responsible for this. And whatever this growth happened in formal sector, because this formal sector job is also leading to what? Contractualization. Leading to contractualization, leading to informalization. अब समझो यहाँ पे क्या माइंडसेट होता है बेसिकली, वो ये होता है कि एक वुमेन को आप हायर कर रहे हो, तो प्रेगनेंसी तो मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा, यू हैव क्रेशिया फैसिलिटी, सो वी आर सीइंग दिस फिनोमेना. अब चूंकि क्या है कि बिग एमएनसीज मैटरनिटी बेनिफिट, क्रेशिया फैसिलिटी, कहीं कहीं वो भी है कि जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, दे आल्सो टेक सम टाइम लीव, तो सब कुछ सही है, यू आर हाईली एफिशिएंट, बट कंपनी देखता कि नहीं यार कॉस्ट बेनिफिट नहीं है. और खास करके जब आप इस वाले फॉर्मेट में जाते हो, तो यहाँ तो सर पूरा ये होता है कि आप एक ही मत आपके उनके लिए टूल हो लेबर प्रोड्यूस करने का, अदरवाइज दे आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, बिकॉज दे आर इज नीदर हैविंग जॉब सिक्योरिटी, नीदर इनकम सिक्योरिटी, नहीं
3 चीजें हमेशा बोलता हूँ, बताओ उसको पूरा करो। जॉब सिक्योरिटी, इनकम Social सिक्योरिटी, तीसरा security. Social security. social security. रट्टा लगा लो, ठीक है। सो सोशल सिक्योरिटी में क्या आता है आपका? मैटरनिटी बेनिफिट, क्रेशन फैसिलिटी एंड ऑल द थिंग्स। सो यू विल नॉट हैव, सो ये वी सॉ व्हाट हैपेंड, क्राउडिंग आउट ऑफ वुमेन। Then sexual harassment at workplace. सर विशाखा गाइडलाइन तो कब आया? 1997, 2004. एंड पॉश कब आया? कौन सा? प्रिवेंशन अच्छा, सेक्सुअल 2012. हरासमेंट 2012. जस्ट इमेजिन कितने दिन बाद हमने इस चीज को रियलाइज किए। पॉक्सो 2012 में आया, पॉस 2013 में आया। We as a country, we have failed to our women. We have failed to realize that it took more than 50 years to realize we need a separate legislation to prevent the sexual harassment of women at workplace, despite knowing the fact we have very worst working culture, work ethos. And because of that, और अभी भी this phenomenon is prevalent यार, especially गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर भी है big. These are some challenges of declining labor force participation rate because of this reason. And इसके कारण सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है अपनी इकोनॉमी में? सबसे बड़ा इम्पैक्ट है सब ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट। सब ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट, सब ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट। तो जो यहाँ आप डेटा यूज करो, IMF says if India's workforce participation rate equals male female, India's GDP will grow by 27%. We are losing out on this opportunity. And the ideals, values enshrined in our preamble constitution is getting denied to majority section of women. Equality of opportunity, equal pay for equal work. These are true in letter, but not in spirit. In spirit, these are not getting implemented. So, very ideals, they are seeing a divergence. Third, this is what political empowerment cannot alone lead to change. That is rooted somewhere in economic. And without economic empowerment, political empowerment always lead to Sarpanch Pati phenomena. This time we'll have MP Pati phenomena. So these are some of the outcome. लिख रहे हो? There is no substitute. There is no substitute for greater participation of women for a society. There is no substitute for greater participation of women for a society to be gender just, to be society, for a society to be gender just. Women empowerment is not only a moral imperative, but a socio-economic necessity. So what we should do? First, we need to make सबसे पहले behavioral change to make female employment acceptable in the society. सबसे पहले तो ये करो कि we have to make them comfortable. We have to make them comfortable कि yeah, you start looking for job. The society is as yours as ours. The society doesn't have any division, neither in the form of glass ceiling or direct. The very first thing has to become, and this should be a collective effort for all the section.
not only from women, not only from male, but we should see society as a whole. We should see in terms of John Rawls' concept of justice as fairness, where he explains justice in terms of chain, society in terms of chain. An iron chain where the weakest link, the strength of the entire chain depend upon the weakest link. एग्जाम्पल में ये एग्जाम में जब भी मेंस में से आता है आपके पास, तो ये वाला हमेशा कोट करते हो, जहां भी मार्जिनलाइज सोसाइटी बारे बात आती है, पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू एवरीवेयर, दिस वाज बेस्ट सुटेबल. तो जहां जहां भी सोसाइटी में कैसी एक्सप्लॉइटेशन वाले, तो यहाँ यू हैव टू कोट जॉन रॉल्स justice as fairness. So what first we need to have this. Second, our economy should create more good and formal jobs. Our economy has to be formal jobs. Why I'm saying formal jobs? Because formal jobs will ensure what? Social security. And a woman is very much in need of social security while going for employment in comparison to male counterpart. Third, we need to develop equal opportunity policy. जो मैं बात कर रहा था ना, there is a constitutional divergence between our constitutional goal of equal opportunity and the actual reality. So उसका solution है, we need to develop equal opportunity policy. In fact, we need to set up equal opportunity commission. हमें लीगल फ्रेमवर्क भी क्रिएट करने की जरूरत है. We need to also create an institutional framework to implement that legal framework. And a strict implementation of all the social security schemes related to women. This is what economic scenario of women. So before starting the social aspect, you have to understand the सबसे least that going to impact a woman. The form of empowerment is political. Because political empowerment without socio-economic empowerment doesn't make any sense. I think Ambedkar has told very rightly. We are entering into political democracy. The still socio-economic democracy is not there. Same thing is applicable here. And in the social, as we saw yesterday in economical sphere, situation is very grim. In social, we see many women, despite having this economic empowerment, still they are socially relegated to the lower setup, marginalized, submissive, subjugated. So यहाँ से the term is gender trap. It happens with gender trap. And this gender trap is a concept which says कि एक लड़की जब a girl is born, she is groomed in such a way, she started taking up her role which is restricted or confined to that particular gender or role. So gender trap says this is because of this. A woman teaches her daughter, small baby, or your family, जो family values हैं, they continue to transmit. बेटा बच्ची 6 months की हुई, so she will only can play with doll. She will have pink. Slowly she is growing up. तो बचपन से ही we have started giving. बेटा खाना बनाना, all these things. Whatever the gender role which has been specified for the women, so they start getting this. And इसको बहुत अच्छे से तुम समझ सकते हो, एक psychological phenomena. Gender trap, how gender trap perpetuates? It perpetuates through social conformity. And this social conformity itself is of two types. One is normative conformity. And another informational conformity. अब नॉर्मेटिव कॉन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि आप यू वांट समथिंग, जस्ट अ मिनट,
सोसाइटी में कोई नया फैशन का ट्रेंड चला, ठीक है, उस फैशन को ट्रेंड को देखते हुए सबको देख रहे हैं कि दबंग मूवी आने के बाद एवरीवन इज वियरिंग रेबन का वो चश्मा, हुर दबंग दबंग वाला। तो जिसको भी वो देख रहा है, सब एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग। आकाश को लगा हम क्यों पीछे रहे, ही आल्सो वेंट एंड ही आल्सो बॉट दिस दबंग दबंग रेबन एविएटर। तो दिस इज, यू आर ट्राइंग टू कन्फर्म with the standard, with social standard which people will appreciate। ये तुम रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन लेने के लिए, काइंड ऑफ सेल्फ खुश करने के लिए तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, फैशन अडॉप्ट करना। कई बार कुछ काम ऐसे कर रहे हो कि टू अपील समवन, नॉर्मेटिव कॉन्फॉर्मिटी। But informational conformity is that when you believe someone is having more authority, someone is having more wisdom, someone is more wise, and you believe his or her judgment, and you blindly follows. Like you see media, एक टाइम मीडिया ऐसी थी, we started we blindly believe, but अभी मीडिया को लेके first when we see news we become critical, सही है कि नहीं है। 2000 का नोट में जीपीएस लग गया। तो दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशनल कन्फॉर्मिटी। अब नाउ इमेजिन ए चाइल्ड, जस्ट 3 or 4 years old child, for him or her, for her parents are most authoritative source of information, her families are most authoritative source of information. So here he is unquestioning, she is unquestioning, she is accepting the things, and this social conformity in the form of informational conformity leading to what? Accepting the gender role which has been perpetuated since centuries। और यहीं पे आके one of the greatest feminists of 20th century, Simon de Beauvoir, says a woman is not born, she is made। Try to understand। उन्होंने 1949 में एक बुक लिखी है द सेकंड सेक्स। और द सेकंड सेक्स जिस टाइम पे ये बुक लिख रही है, शी वाज इन रिलेशनशिप विद अ पर्सन कॉल्ड जीन पॉल सार्त्र। एंड जीन पॉल सार्त्र इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर। इन फैक्ट ही गॉट नोबेल प्राइज। एंड ये बंदा इस लेवल पे एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, मतलब अपने आप को लेके चलने वाला है कि इसने नोबेल प्राइज को रिफ्यूज कर दिया, he gave it back। सो जीन पॉल सार्त्र की ये लिव इन रिलेशनशिप में थी, दोनों ने शादी नहीं किया बिकॉज दे सी मैरिज ए काइंड ऑफ इंपोजिशन। सो एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर ये भी साइमन डी बोवर, शी इज आल्सो एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी है, बट शी इज मेनली अ फेमिनिस्ट। सो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर का जो अभी रिसेंटली आया है कॉन्सेप्ट, बस एक लाइन बताता हूं, ये है कि कोई भी ह्यूमन तो किसी प्री कंसीव्ड नोशन में मत बांधिए, मत कहिए कि ये चूंकि ये ब्लैक है, अफ्रीकन है, तो ही विल बी ओनली फिट फॉर फिजिकल लेबर, वी आर व्हाइट सो वी आर ओनली फॉर मेड फॉर मेंटल लेबर। किसी भी का कोई सेंस फिक्स नहीं है। पहले हमारा सर एग्जिस्टेंस आता है, एंड विथ एग्जिस्टेंस वी स्लोली क्रिएट आवर एसेंस। ठीक है, यही हमारा ऐसे का टॉपिक था, मैन इज नॉट व्हाट ही इज व्हाट ही इज नॉट। वो बेसिकली यहां से आया था टॉपिक। दिस इज वेरी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। सो जीन पॉल सार्त्र का कहना है कि मैन एग्जिस्टेंस हमारा पहले आता है, उसके बाद धीरे अपना सेंस क्रिएट करते हैं। और उसी चीज को मैम बुक तुमने देखा द सेकंड सेक्स में एक नॉच ऊपर लेके गई, बोली कि लड़की और लड़की तो बिल्कुल न्यूट्रल पैदा होती है, उसको जो सोशल कंडीशनिंग के थ्रू उसको वुमेन बना दिया जाता है। ये जेंडर रोल है, दिस जेंडर रोल इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन हर, एंड बिकॉज ऑफ दैट we see this, a woman is not born, a woman is not born, but she is made।
And this trap is continuing. That's why this is the tradition, that patriarchy is continuing since centuries. This has become a tradition. This has become so well accepted. This is least noticeable, but most precocious inequality which society have. So this concept in social will explain the entire. Now we will see why this social phenomena is being perpetuated, in which dimensions. सबसे पहला जो हमारा सोशल कंडीशन है, वो फेवर करता है मेल चाइल्ड को. क्यों करता है मेल चाइल्ड को? आपको बताया था बहुत पहले कि सर सोशल प्रोपेगेंडा होना चाहिए ना. ये तो प्रोपेगेंडा होना चाहिए ना कुछ. विदाउट प्रोपेगेंडा कैसे आप किसी को डोमिनेट करोगे? वी ऑलवेज नीड प्रोपेगेंडा. हमने एक सोसाइटी को बोला कि तू हमारी सेवा कर, उसके लिए हमने प्रोपेगेंडा दिया कि भाई तू लोअर है, तू इम्प्योर है. मतलब कैसे आपने चेक किया वो इम्प्योर है? डू वी हैव सम साइंटिफिक रैशनल पैरामीटर टू चेक द इम्प्योरिटी? We created hierarchy on the basis of this impurity. So similarly, we created another propaganda to dominate, to subjugate women. And this subjugation got social condition of male child preference. Why? Many socio-cultural practices which says कि women नहीं कर सकती, ये मेल ही कर सकता है. To create this पावर स्ट्रक्चर जहां पे आपको आपकी इस पावर को जस्टिफाई किया जा रहा है थ्रू सम illogical things, propaganda. This has been perpetuated. This social condition हमेशा ये दिखाया जा रहा है कि women are not capable of doing certain things. जब पहली बार एक विमेन इज टेकिंग बिकम रेलवे पायलट, लो अरे यार ये काम भी कर सकती है, भाई क्यों नहीं कर सकती? मौका तो दे. इट इज नॉट दैट विमेन, it is not because of inferiority. Women's contribution to the history is insignificant. It is not inferiority. Because of that, women are historically insignificant. Rather, they are historically insignificant. That's why they are treated as inferior. ये भी द बुक सेकंड सेक्स में साइमन डिवोर ने ही बात कही थी, क्योंकि आपने कभी इनको मौका दिया ही नहीं इस पावर स्ट्रक्चर का पार्ट बनने का. And because they were not a part of not because of inferiority, वो inferior है इसलिए उनको इनका हिस्ट्री ऑफ कंट्रीब्यूशन insignificant नहीं है. Rather, because इनको पार्टिसिपेशन आपने करने नहीं दिया, that's why they are inferior. ठीक है. Now this social condition, उनका जो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है वो आपको हर चीज में मैनिफेस्ट होगा. उनके सोशल लिबर्टीज से लेके इंटर हाउस होल्ड रिसोर्स एलोकेशन, उनके डिसीजन मेकिंग, मैरिज, sexual exploitation. In fact, India is yet to recognize marital rape as crime. So this precocious social phenomena, this social phenomena is manifesting in various dimensions. और इस सारे dimension को we can turn into this precocious social phenomena can be seen in two headings. First, tragedy of womanhood. You realize that only because of women you are deprived of many essential basic needs. आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिला होगा, बट स्टिल in your family, in your household,
You are being discriminated. You see your sibling, your male counterpart, your brother is getting preferential treatment. Now what constitution can do here in your family level, in the childhood? And every time you see a dichotomy, a gender dichotomy since your childhood, we see a gender dichotomy जहां पे दो अलग अलग स्टैंडर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं. We have two different kind of standards, and this is being set into your mind. Yeah, this is acceptable. और यहीं पे कहीं ना क्या मैं मेरा वुमेन होना ही मेरे लिए ट्रेजेडी है क्या? This tragedy of womanhood is reflected in care work. You have taken the whole responsibility of the family. You are building up the entire house. You are a glue which binding the individuals to make it a family. But still, this is something is not recognized by anyone. This is something you have to mention in your essay. This is the biggest paradox which India's have, not only India, the entire world have. And why care work is only gender specific? The very first question should be raised here only. If care work, if you can't monetize the care work, we know there will be lot of implication, but at least we can make it gender neutral. Why we have to gender stereotyping? Why we are confining certain gender role with care work? This can be done. Then we see, हमने एक बात कही थी बहुत पहले कि कोई भी pluralistic society में there are two things. One thing is that in pluralistic society में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का क्लास होने के चांसेस रहता है. मैं एक्सप्लेन किया था सब्जेक्ट 3 के क्वेश्चंस में. Once there are chances of class of identity, so we have given group rights in the form of minority rights. So that आपकी जो pluralistic identity है वो सिर्फ उसको हम endangered नहीं करेंगे, so that जो हमारा civic cohesion है वो हमारा intact रहे. And this idea I think we have explained very well. And but we saw again this group को हमने group rights दिए हुए हैं. These groups are not monolithic. ये ग्रुप भी होमोजेनस नहीं है. दिस ग्रुप में तो मेन वुमेन दोनों है. जो फेमिनिस्ट थिंकर वो कहती हैं कि सर माइनॉरिटी राइट्स और प्लुरलिज्म के नाम पे जो आपने ग्रुप ऑटोनॉमी के राइट्स दिए हुए हैं ये वुमेन को सबमिसिव बनाते हैं. बहुत सारे जितने भी पर्सनल लॉज हैं इंडिया में वो ऑल आर डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स वुमेन. हमने कुछ कस्टमरी लॉज दिए हैं ट्राइबल ग्रुप्स को ताकि उनका ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यू विल सी लॉट ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी. So you can quote again this example कि multiculturalism, pluralism, अपना नाम लिख मत देना. मतलब feminist thinker says in the name of pluralism and multiculturalism, women rights and equality, gender equality is ignored. या फिर sideline तो example दे सकते हो सबरीमाला का. And सबरीमाला वाला केस में एक अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ said it is an example of untouchability because the same principle of impurity is again being applied here. So we see here कि precocious social phenomena of gender trap, the woman is not born but she is made, is reflecting itself in 2 dimensions. First was tragedy of womanhood. In tragedy of womanhood, we saw gender dichotomy. Next, the second aspect in which it is manifesting in the form of the curse of femininity. Tragedy of womanhood से भी severe form of the curse of femininity. अब curse of femininity कुछ इस तरह समझो
कि तुम्हारे बेसिक एग्जिस्टेंस, तुम्हारे बेसिक डिग्निटी पे अटैक कर दिया, दैट हैज कंप्लीटली कोरोडेड, दैट हैज बीन कंप्लीटली इरोडेड, एंड स्टिल rather than getting sympathy, rather than getting justice, you are forced, you are being asked to compromise. For example, in the case of rape, it's not victim, it's not accused or perpetrator who got stigmatized, it is the victim who get stigmatized. And India may we see in form of reporting, there is very, very less reporting such a cases. Why? People either they think justice will not be delivered, or they don't want to make it public. Family itself says, okay, let it be. Even if you reach police station, you will not be able to get justice. Many disabilities are there, and this will hamper. Matlab, you have been victimized, you have suffered, and you are being asked to compromise. This is nothing but the curse of femininity, and many it happens in India every day. But एक मैंने बात बताई थी कि जिस टैक्स टू जीडीपी रेशियो वाले में, because of tax to GDP ratio is low, we cannot have systemic response against such kind of phenomena. We only have episodic intervention. Curse of femininity, you can have many more examples. You can include womanhood में, tragedy of womanhood में और example note करो. Phenomena of unborn, phenomena of unwanted girl child. Phenomena of unwanted girl child says, I think this economic survey 2018-19 says that कि in many family what happens when first child is a female, when the first child is girl, so they expect next child to be boy, and then the next child becomes girl. It's kind of disappointing situation. They see it as a, this is something that we didn't want. And suppose from very existence, from very birth, when she is treated as unwanted, how can she continue? How she would be treated for the whole life? And there is one more term that economic survey mentioned. Term was missing woman. In fact, the missing woman term was coined by, I think, Amartya Sen. Missing woman is a term used for the women which would have born if they would not have been feticide. जो अपना ये selective abortion के through women have been killed, girls have been killed. This is the phenomena of missing women. So I think सब कुछ 2.1 करोड़ का डेटा दिया था इकोनॉमिक सर्वे ने, कितना गर्ल्स आर मिसिंग फ्रॉम इंडिया. एंड दिस इज वन मोर, एक फेनोमेना है जिसको आप लोग को देख के लगेगा कि सबसे ज्यादा जब डेटा पब्लिश हुआ था एक बार, सबसे ज्यादा सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हैपेंड इन मिडिल क्लास, not in tribal community, not in poor community. Tribal community and poor community, we saw child sex ratio was far better than average middle class. It happened because this section has access to what? Technology. They can have sex information of fetus, and they have easily access to the abortion facilities. तो अगेन आप यहाँ पे शो कर सकते हो कि इकोनॉमिकली हो सकता है स्टेट ऑफ मूव हो, जब आपका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकता है, हो सकता है एजुकेटेड हो, बट एजुकेशन को वैल्यूज नहीं आएंगे, तो स्टिल यू विल गो फॉर सच एग्जांपल्स. तो जब भी एजुकेशन पैसे आता है, जब भी आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे आता है, तो ये बातें लिखनी है, व्हाई डू वी नीड अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी. आप एग्जांपल देखो समझाना इस बात को, ठीक है. सो वी सॉ दिस ओवरऑल, ठीक है. इसके बाद सोशल में यू कैन, आप लोग और भी कुछ अच्छा लगे तो इन दोनों डायमेंशन डालो. यहां से स्टार्ट करो, जेंडर ट्रैप से, जेंडर ट्रैप से शुरू करो. सोशल कॉन्फॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट समझाओ ब्रीफली. इन मैम को लेके आओ, मैम को लाने के बाद समझाओ कि ये कैसे
ये परकोसिस फेनोमेना कैसे सोसाइटी में परपेचुएटिंग सिंस सेंचुरीज, कैसे पैट्रियार्की इतने दिन से चला आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस। उसके बाद यू कैन से ये जो सोशल कंडीशनिंग थ्रू ये जो सारे चैलेंजेस हैं, दिस कैन बी, ये इसको दो भाग में बताओ कि ये जो परकोसिस सोशल फेनोमेना है दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन टू ट्रेजेडी ऑफ वुमेन है, जो लाइफ टू लाइफ हर नॉर्मल वुमेन को फेस करना पड़ता है, मतलब किसी न किसी डिग्री में। अगर आप अपर क्लास हो फिर भी यू विल फेस सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द फैमिली, पुअर क्लास हो तो भी करोगे, बट दिस कर्स ऑफ फेमिनिटी इज वेरी वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ इंटर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देन यहाँ पे जाके आप यू हैव टू से वन मोर थिंग, एक और जो सबसे बड़ी गलती है वो ये, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वुमेन एज ए मोनोलिथिक ग्रुप। We try to understand women as a monolithic group, and this is one of the biggest misunderstanding, because women is not a monolithic group. जब फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी आनी शुरू हुई, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होनी शुरू हुई, तो इट वाज मोर डोमिनेटेड बाय व्हाइट फीमेल, यूरोप सेंट्रिक। सो ये जो फेमिनिस्ट थिंकर्स थे, इनकी जो कहीं ना कहीं फिलॉसफी थी, ये कहीं ना कहीं यूरोप के सेंटर में रख के और व्हाइट फीमेल को सेंटर में रख के बनाई गई थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट it ignored other sections like black women, Asian women, women from of colonies. And this philosophy more or less didn't recognize इनके needs को. So in 1989, Kimberly Crenshaw, a black woman, said the concept of monolithic group women is not acceptable. Rather, we should think women in terms of, first time she coined a term, we should think in terms of intersectionality. And how this intersectionality works. This is a group. Suppose this is a what? Women group, whole women. But suddenly we saw another section cutting here. And this is income. So this section defines poverty. So this particular zone defines women which are comes below the poverty line. So we will say this women on higher income side will not be equated with this woman. Now there is one more section. वो यहां से कट करके ले जा रहा है. Women from lower caste. Now this section is very very acute. This has been on the intersectionality of three discrimination. First is your gender, second poverty, थर्ड कास्ट. और अभी इतना ही नहीं है, सी एक और इसमें डायमेंशन ऐड कर दो. रीजनल. अब नाउ जस्ट इमेजिन अ वुमन in this particular zone. Just imagine a woman in this particular zone. She is a woman from lower caste. She is a woman from below poverty line. She is from a region which, because of regional reason, geographical reason, it perpetuates discrimination. So एक example लेता हूं. There is a woman from Rajasthan. She is a tribal woman below poverty line, living in a highly water deficit region. So
at the cross section of 4 sections. So this is the perfect example of sectionality. And imagine this woman can't afford water connection at home, tap water. So every day she goes 10 kilometers away to fetch the water. And this water itself is not pure, but somehow she is surviving. And again, 10 kilometers coming back. Overall 20 kilometers. This consumes me 2 hours, 2 to 3 hours. Just imagine 2 to 3 hours of daily life is being wasted. Not only इसका जो पूरा लाइफ है, that लाइफ में जिस काम के पीछे आदमी को नहीं करना चाहिए उस काम पे इंसान अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. She could have used another thing. कुछ नहीं तो यार कम से कम पत्ते लेके वो कुछ क्या बोलते हैं वो लीव्स वगैरह से प्लेट बना सकते हैं. कुछ तो रेम्युनरेटिव काम किया जा सकता है. But she can't do because of this deprivation. And I think one day explained the phenomena of water vibes. This is prevalent in Rajasthan. We also have seen Rajasthan is a state where you will see highest gender literacy gap. And this is not because of this intersectionality. You will see जब इंडिया में चिपको आंदोलन साउथ ये उत्तराखंड में हुआ, व्हेन वी हैड उत्तराखंड के नर्मदा में चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? नर्मदा वैली के उत्तराखंड में. राजस्थान में नहीं, राजस्थान में नहीं हुआ भाई मेरे. अरे वो क्या कहते हैं हिमालय उत्तराखंड में. ये उत्तराखंड में हुआ. गुना वाज द चीफ मिनिस्टर, अंडर हिम बहुगुना के अंडर में हुआ था ये चिपको मूवमेंट. उत्तराखंड. Then we had APICO movement. नहीं, नर्मदा बचाओ वैली तो अलग ही मूवमेंट है. Certainly got confused. चिपको मूवमेंट उत्तराखंड. Then we had APICO movement in southern India. And you will see जब भी तुम्हारे geographical environmental चीजें, women took leadership role. पूरा वर्ल्ड को स्टॉनिश कर दिया कि भाई we can fight because they knew कि तो सीवियरली हमें इम्पैक्ट करने जा रहा है ये. अगर फॉरेस्ट हटाए जाएंगे तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो हटेगा. यहाँ पे वाटर, फ्यूल, फॉडर, all these things. So this is perfect example of intersectionality. And this intersectionality demands whatever the women के लिए जो भी आप approach intervention लेके आओ, that intervention should not be one size fits all. That intervention needs to be very region specific, customized, age specific. अच्छा हाँ, इसमें तो एक इंटरसेक्शन लगाना भूल ही गया, एज. अब जैसे phenomena feminization of elderly people, because it has been seen कि longevity of women is more than male. So once you will see this pyramid में जो अपना पिरामिड होता है, ईच स्ट्रक्चर वाला जो बॉटम टॉप लेवल है, टॉप लेवल में मेल आर लेस, फीमेल आर मोर, because of their more longevity, life expectancy. So what happening? This is creating again problem for them. Feminization of elderly people. Same फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस बार का जो हम लोग हर साल अपना वॉलेंट्री रिव्यू रिपोर्ट सबमिट करते हैं एसडीजी के कॉन्टेक्स्ट में, वीएनआर वॉलेंट्री एन बोल रहा हूँ मैं, वॉलेंट्री रिपोर्ट नीति आयोग सबमिट करती है एसडीजी के कॉन्टेक्स्ट में. तो उसमें पॉवर्टी वाले जो डायमेंशन है उसमें सबसे पहला पॉइंट ही नोट किया है शायद उसने, पहला ये चौथा पॉइंट है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी. बोला कि हम एसडीजी गोल को अचीव कर रहे, बट इंडिया में चैलेंज वी आर फेसिंग, दैट चैलेंज इज फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी. वही फेमिनाइजेशन पॉवर्टी तो होना ही है. फीमेल लेबर फोर्स रिसीड कर रही है, इनकम कहाँ से आएगी? इनकम आएगा नहीं तो बेसिक जो नीड्स है पॉवर्टी लाइन पे, वहां पे भी आप इनको फुलफिल नहीं करा पा रहे हो. तो दिस इज टू फेमिनाइजेशन ऑफ एल्डरली पीपल, फेमिनाइजेशन पॉवर्टी. सो दिस क्रॉस सेक्शन पे देख सकते हैं मल्टीपल क्रॉस सेक्शन. एक तो ये हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शनैलिटी, यहाँ पे इंटरसेक्शनैलिटी है, एवरीवेयर वी आर सीइंग इंटरसेक्शनैलिटी. सो women is not a monolithic group, so its treatment should also be
customized, tailored, region specific, age specific, क्लास स्पेसिफिक, ठीक है। देन अगेन ये वाला एग्जांपल के थ्रू क्या दिखा सकते हो, एग्जांपल अपने ऐसे में एक छोटा सा, बहुत बड़ा मत इलोंगेट करना, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द एसे। या तो एसे ने डायरेक्टली जेंडर और एनवायरमेंट को कनेक्ट करने के लिए बोला है, देन वी विल को, या फिर एसे एनवायरमेंटल के ऊपर, एनवायरमेंट, नेचर, अर्थ के ऊपर है। सो वहां पर दिखाना जेंडर जस्टिस एंड क्लाइमेट जस्टिस, both depends on each other, बट ये वाला डायमेंशन आना ही आना चाहिए, जेंडर वाले ऐसे में आना चाहिए और क्लाइमेट वाले ऐसे में भी आना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस तो समझ रहे हो, जेंडर जस्टिस समझ गए, ठीक है। सो वी सॉ ऑल दिस थिंग्स। कुछ कुछ अगर छूट रहा होगा तो कभी डिस्कशन में कहीं ना कहीं यही जगह, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड। नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। ऐसे में से बनाना मत, ठीक है, समझाने के लिए है। पता चले एक पन्ना यही बना दी, एग्जामिनर भी सोच रहा है कि ये क्या बनाया भाई। सो वी कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपके ऐसे का प्री कंक्लूसिव स्टांस होता है। प्री कंक्लूसिव स्टांस, जहां पे हम बात कर रहे होते हैं व्हाट ऑल सो फार हैज बीन डन। जैसे मैं तुम्हारा ऐसे पढ़ रहा था कंचन, सो यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन, जेंडर एंड डेवलपमेंट इज क्लोजली इंटरलिंक्ड इन बिहार वाला ऐसे जो था, इन दैट ऐसे यू स्टार्टेड गिविंग एग्जांपल्स ऑफ मेनी सोशल स्कीम्स फॉर वुमेन, स्टार्टिंग में डाल दिया। बेसिकली उसका यहाँ पे जगह होता है, जब तुम सारा चीज समझा दो ना, उसके बाद तुम यहाँ बताना होता है प्री कंक्लूजन वाले जगह पे आके कि सो फार व्हाट वी आर डूइंग। तो यहाँ पे आप बताओ ऑल द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, क्रिस्प में। अब यही नहीं कि यही गवर्नमेंट इनिशिएटिव 2 पन्ना पूरे याद कर लिए हैं, चल रहा है एक लाइन से, थोड़ा मोड़ा स्कीम थोड़ा ना वुमेन का भाई, सेंटर का है, स्टेट का है, तो लगे तुम चाहोगे तो पूरा ऐसे ही भर दोगे उसको। तो हम लोग को मेन 5-7 स्कीम्स में मेंशन कर देना है प्री कंक्लूसिव स्टांस में। तो कोशिश करना है कि जितने भी इस तरह के ऐसे हो, एजुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट, ठीक है, सब में प्री कंक्लूसिव स्टांस पे सो फार व्हाट वी हैव डन, ठीक है। बेसिकली उसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव आएंगे, सिविल सोसाइटी का बुला सकते हो, कुछ कुछ जो तुम्हारे हैं, कुछ कुछ मूवमेंट्स वगैरह, ठीक है, कुछ कुछ नाम ला सकते हो, क्या ग्रेटा थनबर्ग अभी जिनको मिला है नोबेल पीस प्राइज, उनका नाम ला सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ले जाके अगेन ऐसे का लेवल उठाओ, ये वाला फैक्चुअल पार्ट रहता है, एग्जामिनर भी जानता है कि फैक्चुअल पार्ट है, ठीक है। फिर से तुमने चूंकि इतना अच्छा डिस्कशन लेके आ रहे हो, यू आर हाईली फिलोसफिकल, तुम एकदम पोस्टमार्टम अप्रोच लेके आ रहे हो, एक चीज दिखा रहे हो ब्रेक करके। सो यहाँ पे जाके फिर से तुमने ऐसे का लेवल उठाना है, छोटा सा पॉज दिया है, ठीक है, फिर यहाँ से उठेगा ऐसे का लेवल। Here we start saying we need, so far we focused only on empowering women, whereas empowerment of women is a passive concept. I think many times I have explained this, how empowerment of women is a passive concept. See, Simon de Beauvoir in his book The Second Sex, she says कि for long male has considered themselves as default humanity, and women are seen as other. So जैसे ही बात आती है ना सर women empowerment की, so this default try to empower other, again this dichotomy is still present, this dichotomy which is perpetuating this gender division since Neolithic revolution, this dichotomy is still present in the concept of empowerment. When the
concept of empowerment is taken in very narrow sense. तो इसका क्या क्या अप्रोच हो सकता है? तो व्हाट वी शुड डू, फर्स्ट वी शुड गो राइट बेस्ड एम्पावरमेंट. एटलीस्ट जो भी हमारा अप्रोच है वो राइट बेस्ड एम्पावरमेंट होना चाहिए. नॉट वी शुड थिंक ऑफ पैटर्नलिस्टिक अप्रोच. ये मैंने कहीं पहले समझाया, बहुत पहले जब मैं डीपीएसपी या कुछ पढ़ा रहा था तब. आकाश याद है पैटर्नलिस्टिक अप्रोच? कोई बोलेगा नहीं. पैटर्निस्टिक हाँ? मींस दैट मैटरनिटी और पैटर्निटी ना. बहुत तेरी के मैंने पढ़ाया था ना, स्टेट बिकम पैटर्नलिस्टिक इन वेलफेयर अप्रोच. Yes. चलो भूल गए तो मैं बताऊंगा नहीं. We don't need paternalistic approach. Paternalistic approach is the core of empowerment based philosophy. Rather, we need right based empowerment. पहला चीज. And basically, what is empowerment? So empowerment basically involves enhancing the assets and capabilities of individual and groups to engage and influence the institutions, involving and enhancing capabilities of group individual and they influence the institutions which affect them. तो अभी जो तुम्हारा ये है नारी बंधन अधिनियम, सो व्हाट इज उस इंस्टीट्यूशन में women को empower किया जा रहा है so that women can involve in the decision making process. They can affect the law making process. But still you see this empowerment is done by a legislative house which is male dominated. तो यहां पे आके एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर empowerment most of the time is created through interdependency. वो जो इंडिपेंडेंस के अपन बात कर रहे हैं शुरू से, सर वो इंडिपेंडेंस ग्रॉस फॉर्म में तो दिख रहा है कि हट रहा है, बट सटल फॉर्म में वो इंटरडिपेंडेंसी अभी भी है. Because of that failed. What failed, sir? Political empowerment. So what interdependency led? Sarpanchpati phenomena. That empowerment we had again in which section? Economic. So we saw एक तो female labor force decline हो रही है, दूसरा we saw glass ceiling. Again we saw in social again dependency. So empowerment when is done through some passive agency, leading to passive agency. So it is leading इंटरडिपेंडेंसी. जहां पे इंटरडिपेंडेंसी है यहां पे सर पता नहीं क्या होगा, ऑटोनॉमी सर नहीं होगी. And autonomy is related to what? Choice, decision making capability. Autonomy always means first independence. It forces you to become more responsible, not more responsible for a decision. आप अब ये नहीं कह सकते हो कि देखो empowerment का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. एक लड़की हैज टू गो टू राइट एन एग्जाम यूपी में, एंड उसकी फैमिली अच्छी वेलबींग फैमिली है, एंड हर फादर इज गोइंग विथ हर. बढ़िया ऐसी सेकंड टियर में टिकट बुक करा दिया, बढ़िया होटल, पापा जान दिला के पापा ले आए. दिस इज द केस ऑफ empowerment. But on the other hand, she took decision. वो अपने आप जाती है, उसको जैसे जाना चाहे जहां रहना करके अपने पैर पे इंडिपेंडेंट होके बस एग्जाम देके आती है. इकोनॉमिकली सी इज अपने आप को कर लेती है मैनेज, डूइंग सम जॉब और या फिर सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज.
tuition वगैरह anything. This is a case of autonomy, independence. So empowerment दोनों फर्क है. Always you become passive. So this autonomy will come when we going through agency approach. And the best example you can quote in your essay is, sir, how this agency approach has transformed the concept of women empowerment can be seen in the SSGs. बिहार में लिख रहे हो तो जीविका, because agency based approach perpetuates or depends on three factors: collective decision making, decision making, leadership, and collective action. And you see these three components together got converged in SSG. And because of that, we saw SSG was treated as a simply a kind of conduit by through which financial inclusion will take place. But we saw it has implication in other sectors. Government started incorporating livelihood opportunities. Now they are thinking of creating micro entrepreneurs. But more than this, it created spillover effect in many other dimensions. Gender disparity वो कम हो गई, इंटर हाउसहोल्ड रिसोर्स एलोकेशन बढ़ना शुरू हो गया, हाउसहोल्ड में वुमेन का सेस शुरू हो गया बढ़ना, डिसीजन से पूछ के लिया जा रहा है, गर्ल चाइल्ड को पढ़ाने फोकस किया जा रहा है, पॉलिटिकली women are becoming assertive. So we can quote this example. हमने बहुत सारा ऐसा डायरेक्टली एम्पावर करने की कोशिश की, that didn't was the result as this. So एग्जाम्पल देके ये तीन बात लिख के यू विल से ये डायग्राम ऐसे मत बनाना, अगर तुम्हारे इसे कॉपी में आता है, जीएस में आता तो बनाना, ऐसे मत बनाना, ऐसे में खड़ूस बड़ो सब रहता है तुम्हारा, है ना. अपने बुक में हमने हमेशा अदर वाला जो कॉन्सेप्ट बना रखा है कि मेल बाय डिफॉल्ट अपने को समझते हैं कि हम पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैं और दे आर अदर, और ये इंपावर करेंगे इनको. तो ऑलवेज यहाँ पे ना, जब इंपावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये पैसिव है. तो पैसिव में क्या होगा सर, एक रेसिपिएंट होगा, एक एक्टर होगा, तो ऑटोमेटिक इट इन्वॉल्व्स एक्टर जो कि बिहाइंड द कर्टन है बट है. और ये जो पावर स्ट्रक्चर है जो इसको परपेचुएट किया जा रहा है. लेकिन जब आपके पास एम्पावरमेंट नहीं, आप स्लोली फंडामेंटल जो प्रॉब्लम इसको दूर करके आप वुमेन को कैपेबल बन रही सोसाइटी के थ्रू, वो एजेंसी क्रिएट हो जिसके थ्रू एक टाइम ऐसा आता है वो सारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले रही, whether it's political, economical, social, वो सारी चीजें क्लियर मारा. ग्लास सीलिंग इज नॉट, सपोज एक वुमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा फ्रंट वुमेन कहीं खड़ा किया हुआ है, तो वहां पे क्या ग्लास सीलिंग होगा, सीईओ ही वुमेन है, कंपनी मेजॉरिटी वुमेन है, ठीक है, तो वहां पे ग्लास सीलिंग क्या होगा, ठीक है. तो ये सारी चीजें लास्ट में कंक्लूजन जाते हो ऐसे लिखना, when we have entered into the era of Amrit Kaal, let's place अब तुमको जैसे ट्रांसफॉर्म करना, कुछ कीवर्ड्स लिख लो, तुम reach gender poverty to gender prosperity. Let us feminize compassion. Let us globalize feminism. Let us move from gender inequality to gender parity. इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि this Amrit Kaal, I have a dream where India moves from gender poverty to gender prosperity, where India feminizes compassion, where India globalizes feminism, where gender equality is
shifted, जब gender inequality moved to gender parity, and finally एक word लिखना है यहाँ पे, we don't need women empowerment. We need women led empowerment. रट्टा लगा लो, एग्जाम में कोई भी आएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से लिख देना। इसी को बोलते हैं रेटोरिक कंक्लूजन। रेटोरिक कंक्लूजन में क्या करना है आपको, ये तुम्हारा कंक्लूजन के लिए तुमने इतना पेज छोड़ा हुआ है, पहले से याद रखना कितना पेज रहेगा तुम्हारे कंक्लूजन के लिए। यहाँ पे तुम स्टार्ट करोगे कि इन दिस ऐसे वी सॉ हाउ जेंडर पैराडॉक्स converges into great gender divergence and this is reflected in various phenomena. ठीक है, थोड़ा सा जो की टर्म जेंडर ट्रैप leading to tragedy of womanhood and curse of femininity. ठीक है, and we saw this phenomena is prevalent, but we also saw this is the solution lies in when we reach, when we adopt agency based approach, which can be realized through personal is political. So on this occasion when India has entered an Amrit Kal, I dream of India becoming, अब यहाँ पे वो 5 से 7 लाइन है, यहाँ लिख के कंक्लूड करना। तो ये वाला पार्ट ऐसे कंक्लूड होता है, किसी कैसे में अभी तुमने देखा नहीं वैसे कंक्लूड करते हुए, मतलब पूरा ऐसे क्रिस्प लिखो यहाँ पे कीवर्ड्स के साथ में, और यहाँ पे टोन सडनली चेंज करो और इसको हायर नोट पे लेके जाओ। एग्जामिनर को फिर से सारा रिकॉल हो जाता है यहाँ पे, और जो तुम हायर नोट पे इंड करते यहीं पे स्कोर देता है वो, तो तुम्हारा अगर स्कोर अगर 50 देने वाला होगा तो 60 कर देगा, 60 देने वाला होगा तो 65 कर देगा। So this is what how to conclude ऐसे। थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने कॉपीज में